Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX. Our big focus this hour: incessant rainfall and swelling rivers have caused devastation in Punjab, leaving several villages submerged and thousands of people struggling for essential supplies. The death toll in the state has risen to 47. Punjab is grappling with its most devastating floods in nearly 4 decades, as all 23 districts of the state have been declared disaster hit. However, 7 districts, Gurdaspur, Amritsar, Fazilka, Firozpur, Kapurthala, Hoshiarpur and Pathankot, have borne the brunt of the calamity. 85% of the total flood-affected population residing in these areas. These districts alone account for 3.29 lakh of the 3.87 lakh people impacted across the state, making them the epicenter of the ongoing crisis. Well, today we want to take a moment also to talk about Gurpreet Singh, who was paralyzed from the waist down in a 2019 construction site accident. When his house was inundated with 2 feet of water, Gurpreet faced immense challenges. My colleague Brian visited his home and spoke with him and his family to understand their challenges. बिजली भी नहीं थी, उसका बताइए बिजली कितने दिन से आप लोग के घर पे नहीं थी और कब आई? सर बिजली तो हमारे यहाँ 15 दिन के बाद में कल आया है, तो थोड़ा शांति मिली, नहीं तो बहुत मुश्किल। पानी आ गया, पानी से प्रदूषण उठता है बहुत। आप देख ही रहे, आपको कैसे पसीना आ रहा है। मैं खड़ा हूँ यहाँ, अभी लाइट आ रहा है, तो ये हाल है। जब ऑफ लाइट में क्या हाल होगा? 15 दिन तक कोई बिजली नहीं थी। कोई बिजली नहीं थी और ये कल ही आया है? कल बिजली आया जी। और जैसे अगर पानी की बात करें, पानी घर तक आया है आपके घर तक? क्योंकि मैं रास्ते में था, मैं देख रहा था रास्ते तक पानी आ गया था। एक ग्राउंड था, ग्राउंड तक पानी पूरा 5-5, 6-6 फुट तक पानी। इनके घर तक 2-2, 3-3 फुट पानी आया है। ये बेचारा अंगीन कैसे चल के बाहर जाता है पानी में, इसको पता है। जहाँ इसकी कंडीशन जो पानी समय आया, इनकी कंडीशन का इसी को पता है। जहाँ पानी आया सबको तो आपको अपनी पड़ गई कि हम अपने बच्चे बचा लें, लेकिन इसका तो किसी ने नहीं देखा ना। और स्कूल भी अभी बंद है? स्कूल का क्या स्थिति है? स्कूल सर बंद है। जितने देर से पानी की वायु बना है, वहाँ से उतने दिन से स्कूल भी पानी आ गया है। स्कूल तो सर कंध पूरे तहस नहस हो गया। स्कूल की फिरनी सब तहस नहस है, पानी ने उसको। Well, another story, meanwhile, that needs our attention is of Hoshiar Masi. He is elderly, paralyzed on his left side when he met with an accident at his workplace 3 years ago. Now he depends on a cane or his wife to walk, with resources already scarce for his household. Punjab floods have worsened his conditions even further. My colleague Brian visited his home and spoke with him. पानी इनके घर तक भी आया था। पानी की दिक्कत, क्योंकि रास्ते तक पानी था। मैं एक और आदमी से बात कर रहा था, उन तक भी घर तक भी पानी पहुंच गया था। तो इनके घर तक भी पानी हुआ था, इनके भी नुकसान हुए थे। हाँ जी, अपने घर पानी आया ही ना, काफ़ी बहुत पानी। ये नुकसान तो है, देखो जो दीवार फटी हुई है ना, पानी से जो ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले तो अच्छा था, ठीक चलता था। जैसे पानी आता है तो वैसे वैसे स्लैब चढ़ता गया, तो दोबारा नुकसान की बात करें, मोटा मोटी नुकसान कितने का हुआ होगा ये पानी की वजह से, अगर आप इनको पूछे एक बार? अपना कितना नुकसान है? ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ घर दे जो बोल रहे हैं कि जो छतें हैं वही आपने देखा हुआ है, वही अभी गिरी है। तो जो सामान है घर का, खाने पीने का, वो भी सभी खराब हुआ है। जो आपका बरतने का सामान है वो खराब हुआ है। गिर गया था ना, वो गिरने के बाद फिर उसने उठा के ऊपर तरपाले पहनी हो सभी, फिर दोबारा से मरम्मती की है थोड़ी। जैसे मैं इनसे भी बात कर रहा था, बिजली भी शायद 10-15 दिन से नहीं थी, कल आई थी। बिजली का भी कुछ हुआ था? हाँ सर, कल सुबह आया था बिजली कोई 5 मिनट में। उसके बाद फिर उसने छोड़ा था, छोड़ने के बाद रात थोड़ा बिजली आ रहा था। पहले तो 10 दिन के जब फ्लड आ रहा था, उनके बाद उसके 1 दिन पहले बिजली खत्म। Well, these stories represent just a fraction of the 3.87 lakh people affected by the devastating floods in Punjab. Our hope is to bring attention to those struggling on the ground and also explore ways to provide support for individuals in need of medical attention. What steps can be taken to ensure they receive the care they require? Let me also bring in now another special guest on the broadcast. Jagmeet Singh Brar, former Lok Sabha Member of Parliament, is joining us live on the broadcast as well. Jagmeet Singh Brar, thank you for speaking with NewsX. How serious is the situation, sir, in the area where you are currently, also in your home district? Because we are seeing very, very distressing visuals coming in from all across the state of Punjab. Yeah, the situation is very serious, and in fact,
in my district and border district of Firozpur and Fazilka, it is the worst times we have had since 1988 and then 2023, and now again, third time. The worst suffering is in this district, and we hope the visit of the Honorable Agriculture Minister when he visited a day back, the assessment which he gave, I think that was very clear that it's not only a nature's fury, basically it's man-made, and the respective governments for the last 40 years, odd after 88, they have not cared to take proper into account how these things are to be improved, how the dams, how the basically the rivers, how the silting process has to take place. There was no committee. The bureaucracy in Punjab was lethargic. There was no interest. There was no interest of the political leadership for these years. They knew what's going to happen, and ultimately during the monsoon session, always these four basins, maybe Ravi, Satluj, Beas, and Ghaggar, they always are in a fury, and we have been facing these problems since long. And Punjab do hope that the Honorable Prime Minister is also visiting on the 9th September. But unfortunately, I must say that no political party or any organization worth its, who actually represent the masses, they have never cared to be together on this issue and then meet the Honorable Prime Minister or the central team and give them their assessment. The political leadership of the Congress, of the Akali Dal, maybe of AAP, because AAP is ruling for the last 3.5, 4 years. So they have not moved an inch forward. I've heard that the disaster management fund, Yes. that is also being it's there around about 9,000 crores. It was not utilized. So you can see the concern that how when ultimately we had this worst period, now everybody is trying to build bridges, but I think the culture, the heritage, the sentiments which the Punjabis have expressed across border and plus in Yes. India and the Bollywood, that has really given a sense of relief to Absolutely. But Punjabis. on ground, sir, before we get to, of course, the factors that have caused this as well, but on ground right now, because obviously rescue, relief, rehabilitation is a priority, what are the obstacles, still that the teams on ground are facing, in bringing about relief, in extending help to the people on ground who are suffering? I think one thing which I have the information, and being an eyewitness to the situation, there is no scarcity of any food. There's no scarcity of diesel up till now because the diesel is being provided by different people. The tractors are also being sent, and the youth of Punjab, especially, putting up their independent flags and the Khalsa Jalo, which always is there during the crisis period. I think thousands of the young people, ultimately the state was named a Nashedi state, but I think for the last 1 week, the way youth has come forward, the government or maybe the state government or the central government, their role is limited to 5%. It's only the people who are playing the major role. Yes. Also, now coming to the factors that have caused this as well. You were saying earlier that a lot of it is man-made as well. So you believe that it's not just environmental reasons, it's not just climate change, Mr. Brar, it's not just adverse weather, but a lot of this is man-made as well, you believe? Why is that? It's 100% because for the last 50 years odd, the silting process has increased the bed to 50 feet. And the water and the silting and the soil which comes, at a galloping speed when it comes to one dam and then ultimately crosses the next dam like Harike and from Pong, and later on, the things get worse. And that is why
these areas are flooded, and the Dusi bunds which have been made ultimately, but they have never been repaired. And there were irrigation scandals in Punjab during Congress Akali Dal governments, because I think thousands of crores were swindled, and the money which we got from the World Bank, the money which we got from the center. I am sorry to say, I don't personally allege anybody, but it's on record that there have been irrigation scandals of and covering up this issue, and there many politicians and very very big fat bureaucrats were involved in this, who used to play golf after 1 p.m. and they never cared, and they made a lot of money out of this, and there was no sense of belonging as far as Punjab was concerned, which was a granary of India and which ultimately helped this country to come out of many crises. But I think the attitude of the it seems to be that the visit of the Prime Minister, if we ask for a special package, Yes. and all the political parties join together, and we How meet him essential is that? during How this time. essential is that at this juncture? We do know, of course, the Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan was there just a couple of days ago. You were referring to his visit as well. Prime Yeah. Minister Modi is scheduled to visit as well No, very soon. yeah. How most important is it that the thing- centre and state coordinate at this point, despite the fact that there are different parties in power in Delhi and also in Punjab at this juncture? How important is it that unity comes in at this point from the political class as well, and there is centre-state coordination for relief? You're absolutely right, because there was one statement from a very senior leader of the Aam Aadmi Party, who happens to be next to the chief minister, that why India is helping Afghanistan. See, this is a foolish statement. Ultimately, Afghanistan tragedy and whatever has taken place, it is basically a neighboring country, and the decision was taken earlier. And at the international level, the decisions of the country have to be taken keeping in totality of the international situation in mind. And there were very small sort of hearted statements made by leaders or from other parties also. In fact, they make reels, they go to the villages, they show themselves to be heroes, and they give some money here and there. But ultimately, after a day or 24 hours, they are never to be seen. Right. This has to continue for at least a year or 6 months to ultimately cover. So I think the political parties should join hands at this juncture. At Yes. least during this period, we should all be together, and we should not criticize personally any party or the central government, because the basic moot point was Shivraj Singh Chauhan. I respect him as son of the soil. He had said that the mining process which took place in Punjab, and during this mining, everything with the riverbeds basically got disturbed. It's due to mining effect that the floods take place. This is what his basic statement for it was. It is one of the reasons. Okay. I admit that it's one of the reasons. It's not the Okay. sole reason for the floods. But for the last 50 years, no government, no leader after Sardar Pratap Singh Cairo has cared or thought about the futuristic Punjab. Maybe it's July, Right. it's June, it's August, it's September. Right. In 55 and 47 and 90, then again 2023 and 2027. Okay. We have not learned any lesson, Udayji, what I Right. learned. Also, now, how can people come forward to help as well? You were talking about, the work that the youth of Punjab is doing currently at this juncture. How can people across the country, across the world, who are watching you and watching our broadcast and watching the devastation and, getting very emotional seeing these visuals, how can people come forward and help as well? I think the report of the government which I was reading today is that 4 lakh acres have been destroyed, the paddy. First is that if you calculate on a 1 lakh basis also, it's basically 4 lakh crores, the loss which is there. And this loss has to be compensated, and there has to be a special package, because if we pay per acre to the farmer what is, the rules and regulations are, that doesn't cover. Because last time
the farmers sowed their next crop and they tried to get some, reaping benefit out of it. But this time it's totally destroyed. Okay. And it's not only one fasal, it is going to be only one crop, but coming years also we are going to suffer for that. So I think the entire world, which holds Punjab in such high esteem because of their rigor, their contribution, and always helping others. Sarbat Ka Bhala during COVID, during Khalsa Aid was available everywhere in the world. And the impression, the Sikh community, especially the Punjabis as a whole in the world, is I think we are definitely getting the required help which Punjab needs. Okay. Thank you very much, Jagmeet Singh Brar, for joining us with your perspective on this big story. Let me draw in now Kuldeep Singh Dhillon, Congress MLA from Barnala. Kuldeep Singh Dhillon, if you can hear me now, abhi sthiti kya hai Barnala mein? What is the situation on ground there in your constituency, in your home district? बरनाला में क्या है, लेकिन बाढ़ के कारण जहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कई जगह पे जो गरीब लोग हैं उनके घर हाउस डिगने के कारण डेथ भी हुई है। एक हमारे बरनाला में हुई है और एक हमारे साथ हल्का है बदौर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जी, वहां भी 2 लोगों की डेथ हुई है। और जो काफी नुकसान है हाउसेज का, क्योंकि लगातार बात करने के कारण उनका जो उनके घर का काफी लॉस हुआ है जी। जो पिछले जो ड्रेनेज वगैरह का जो प्रॉपर जड़ा सफाई नहीं हुई समय पे, उसी कारण भी कई जगह काफी दिक्कत क्रिएट हो रही है। राहत कार्य भी जो चल रहे हैं जमीनी स्तर पर, कुलदीप ढिल्लन जी, राहत कार्य जो चल रहे हैं, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं उन राहत कार्य के लिए? देखो, अभी तो जो हमारे बरनाला में तो ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है लोगों की, लेकिन मेरी ऑफिसर से बात हुई थी, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, तो उन्होंने बोला हमारे को आप आइडेंटिफाई करा दो जो लोगों का नुकसान हुआ है, हम उनको जो नुकसान हुआ वो देंगे। वो कब देते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इन लोगों ने, सरकार ने 2030 में भी लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, जहां जहां भी बाढ़ आई थी कि हम आपको जो आपकी फसल का नुकसान हुआ है, आपके फसलों का नुकसान हुआ है, आपके घरों का नुकसान हुआ है, वो सभी आपको देंगे। लेकिन 2023 किसी को कंपनसेशन नहीं मिली। तो हमने बोला तो है भी आप ऑफिसर्स को मिलके भी इन लोगों की हमें बात पकड़नी चाहिए, लेकिन अभी तक जब सरकार कुछ उनको देती है तभी पता चलेगा जी। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं आपके नेता भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, आप भी खुद एमएलए होते हुए कार्य कर रहे होंगे वहां। कांग्रेस पार्टी का सहयोग है सरकार से? क्या आपको लगता है इस वक्त सब पार्टियों का एकत्रित होना जरूरी है? इस वक्त बिकरिंग नहीं होना चाहिए, इस वक्त यूनिटी होना चाहिए, केंद्र द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा और आपकी पार्टी द्वारा भी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं तो निजी तौर पे यही चाहता हूं कि सभी को, हमारे को एक साथ एकजुट होके राजनीति से उठ के लोगों को की देखभाल, उन लोगों की सेवा में हमें जुटना चाहिए जो पीड़ित हैं, जिनका नुकसान हुआ है। हमारी पार्टी की जो समूची लीडरशिप है, जो बॉर्डर एरिया पे जहां जहां भी जो ज्यादा नुकसान हुआ है सतलुज के तरफ, तो हमारी पार्टी जितना भी हो सकता है, क्योंकि हमारी दिल्ली में भी सरकार नहीं है और पंजाब में भी नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए आगे से जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आगे भी हमारी बातचीत हो रही है हमारी स्टेट लीडरशिप के साथ, आगे भी जैसे है कि अभी बहुत सारे लोग एनजीओ वगैरह और लोग वहाँ सामान वगैरह भेज रहे हैं, जो पता चल रहा है ज्यादा जा रहा है सामान, तो वहां से पता लगा भी उनको जब पानी कम हो जाता है आने वाले 15-20 दिन में उनको और ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बाढ़ के कारण, बाढ़ से जो वो गाद वगैरह आ जाती है खेतों में, घरों में, उनकी सफाई के लिए उनको डीजल के पैसे, उनके और मेडिसिन वगैरह भी, और तो 15 दिन के बाद जब पानी कम हो जाता है लोग भी कम देने लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी लीडरशिप को मैंने भी एडवाइस किया भी हम उस टाइम भी उन लोगों के साथ खड़े जाके, और हम खड़ेंगे जाके उनके साथ, जितने भी हम अपनी तरफ से, हमारे जहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने सभी ने भरोसा दिया जब भी
अपने आप हुक्म करोगे, आप आदेश करोगे तो हम अपनी वजह क्या लीडरशिप के मानते हैं साथ आप प्रोग्राम कुलदीप बना ढिल्लन जी, के। वजह क्या मानते हैं आप? ये कहीं ना कहीं ये मैन मेड ट्रेजेडी भी है। वजह क्या मानते हैं आप? क्या क्या फैक्टर्स ने ये देखो, त्रासदी करवाई है? ये क्या एनवायरमेंटल वजहों से हुई है? ये बाढ़ जो स्थिति पैदा हुई है, क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पर्यावरण कारणों से हुई है, या कहीं ना कहीं और कोई वजह भी है? क्योंकि इस तरह की त्रासदी पंजाब में काफी दशकों बाद देखी जा रही है। दोनों ही बात है, कुदरती भी है और मैनमेड भी है। क्योंकि जैसे हमारे जो डैम है, पूरा जो हमारे को पहले पता होना चाहिए कि आने बड़ा समय क्लाइमेट कैसा होगा, बात होगी ना होगी। तो जो हम धीरे धीरे जो डैम से दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम वो डैम भरने के चक्कर में तो उसको पहले पानी स्टॉप करते रहते हैं, जब लेकिन जब खतरे के इंसान देते हैं तो जिसके कारण ये दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत चीज भी है, जैसे हमारे जहाँ पंजाब सरकार बोल रही है हमने 250 करोड़ रुपये नालों की सफाई के लिए, ड्रेनों की सफाई के लिए खर्चा है। तो लगता भी ऐसा, जहाँ जो मैं जहाँ पर देखा है कि ऐसी कोई भी ड्रेन यदि कोई प्रॉपर उनकी सफाई नहीं हुई उनमें, वैसी वो जो गाह हुआ जड़ी बूटी होती है कि ड्रेन में आप देखते हो कि वो वैसी है कि उनके जो पुल वगैरह हैं, काफी पुल ऐसे हैं जो पुराने हैं। जब उसमें कोई पीछे के रास्ते आते नाले वगैरह टूटते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत क्रिएट हो रही है। जो हमारे वन है, चाहे ग्राम के हैं चाहे रेंज के हैं, उनको भी प्रॉपर मजबूत नहीं किया गया। तो जो अ, जैसे भी अभी आपने इतना नुकसान झेल लिया है, जेकर यही पैसा हम जब अभी खर्च रहे हैं जहाँ खर्चेंगे, जो समय पर उस पर ध्यान दिया जाए तो हम थोड़ा कुछ ना कुछ लोगों की उस समस्या से राहत दिला सकते हैं। लोग कैसे मदद कर सकते हैं? अभी लोगों को क्या विनती करेंगे आप? जो दर्शक आपने देख रहे हैं आज, उनको क्या विनती आप करांगे? क्योंकि सहायता आवश्यक है पंजाब के लिए इस बड़े कठिन दौर में, और वो सहायता हर राज्य से आनी चाहिए, वो सहायता हर उस ऐसे शख्स से आनी चाहिए जो अभी सहायता करना चाहते हैं पंजाब की। हम देख रहे हैं बॉलीवुड के अनेक एक्टर, पंजाब इंडस्ट्री के सिंगर और फिल्म स्टार्स भी सामने आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लोग भी सामने आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग सामने आ रहे हैं। क्या क्या कार्य कर सकते हैं अगर लोग, सहायता कैसे कर सकते हैं अगर करना चाहें पंजाब के लोगों के लिए? देखो, जो भी मैं तो सभी को, आम लोगों को बेनती करूंगा भी, जो हमारे को सभी को, अदर स्टेट वालों को मैं बेनती करूंगा, पंजाब के लोग तो यहीं भी कहीं को, चाहे गुजरात में कहीं ऐसी प्रॉब्लम आई, कहीं किसी समय में कहीं कहीं कितने और दिक्कत आई, तो पंजाब के लोग तो बीरा गत के वहां चले जाते हैं। तो उनको मैं बेनती करूंगा वो पंजाब के लोगों के साथ सभी खड़े भाईचारे के नाते। तो पंजाब के लोगों में जो कहता हूँ भी, जो भी जितनी भी कोई अपनी उन लोगों की हेल्प कर सकता है, हम एक साथ होकर उनकी हेल्प करें, उनकी बांह पकड़े, उनके मुड़ बसेने के लिए, उनको मुड़ पैरों पर खड़ा करने के लिए। क्योंकि वहां पे जिनके पशु वगैरह, एनिमल वगैरह थे, वो भी लॉस हो गया, उनका खेतों का भी लॉस हो गया। तो हमें उनकी सभी को रल के, सरकारों को भी आम लोगों को भी रल के कोई प्रॉपर उनको मैनेज कैसे करना है, ये प्रशासन को चाहिए कि उन्हें एनजीओ के साथ कॉन्टेक्ट करके क्या है तो जी, और अभी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? आखिरी सवाल आपसे ढिल्लन जी, आखिरी सवाल आपसे, समय कम है तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्रायोरिटीज अभी क्या होनी चाहिए? राज्य सरकार का जो राहत कार्य चल रहा है, केंद्र सरकार का भी जो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी शायद आएंगे गुरदासपुर और अन्य इलाकों में आएंगे परसों। केंद्र के एग्रीकल्चर मंत्री भी थे पंजाब में कुछ ही दिन पहले। अभी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की? तो मैं जो साथ कुछ लेके आए पंजाब के लिए, प्रधानमंत्री जब आएंगे उनके लिए एक अच्छा पैक्ट लेके आए ताकि उन लोगों का भी हम कुछ हेल्प कर सके। लेकिन कल दौरे करने से कुछ नहीं मतलब होने वाला, ना पंजाब सरकार का, ना दिल्ली का मंत्री गए, वो देख के तो चले गए, तो नुक्ताचीनी भी करके चले गए भाई इस कारण ये नुकसान हुआ। लेकिन हम लोगों की बात कैसे पकड़नी है, ये किसी की वजह से है तो उनके खिलाफ, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है सबसे पहले उनका मुआवजे में उनको राहत देने की बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार को एक बड़ा पैकेज पंजाब के लिए देना चाहिए ताकि उन लोगों को हम रिलीफ दे सकें।
चलिए, कुलदीप सिंह ढिलन, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ एक्स विद योर Thank you पर्सपेक्टिव. very much. Let's take a short break on that note. Much more coming up on the other side.